Hi everyone, I'm Alka Sharma and I'm going to teach you nature of sociology. सोशियोलॉजी को हम हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं और नेचर प्रकृति को कहते हैं। तो आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस which is concerned with the study of society and human behavior and relationships. This word sociology is made up of two words. Number one is Latin word socius, which means society. And second one is Greek word logos, which means study. So the combined meaning of socius and logos means study of society. So sociology is the study of society. And what is society? You know better that we live in society which is a web of so many relationships, and society is an organized group of persons associated together for religious, cultural, political, social, patriotic or other purposes. Religious functions और religious purposes की जब हम बात करेंगे तो we perform several functions in society. Pilgrimage में जाते हैं हम लोग, we arrange सत्संग्स, कीर्तन्स, cultural functions हैं, cultural purposes हैं, we organize dance parties, we share communications, we share views, we share exchange of ideas, we raise ideas, then political purposes, we cast vote, we obey the orders of government, and so many purposes are there. Social purposes हैं तो we attend several marriage ceremonies, funerals में जाते हैं. Patriotic purposes हैं तो we live peacefully. We want to make our nation very peaceful. इसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं जो सोशियोलॉजी को एक बूस्ट प्रोवाइड करते हैं. Now let me tell you the name of father of sociology. Auguste Comte. He was a sociologist and he was the first to develop the concept of sociology. What did he say about sociology? He said, sociology is a positive science. पॉजिटिव साइंस क्यों कहा है ऑगस्ट कॉम ने सोशियोलॉजी को? कॉम saw society as an experimental science, as positive science. He wants to observe the society. He wants to make experiments in order to observe the behavior of individuals. And Comte divided sociology into two main fields or branches. Number one is social statics and number two is social dynamics. These two main branches are very important in order to study society. What does it mean? Social statics is concerned with the present structure of the society. It studies the current rules, laws, and present condition of the society. Society made is often observed as how the present social laws are affecting the society. Social statics जो है, it has been renamed as social structure, and social dynamics is related to social change because various processes of social changes are taking place. So both social statics and social dynamics are the main fields or branches given by Auguste Comte. Second definition has been given by Emile Durkheim, again, which is very, very important. Emile Durkheim defines sociology as the study of social facts. Now, social facts are social things,
and social things are concerned with social rules, norms, laws, values, beliefs, rituals, customs, and several roles and statuses. So, accordingly, social facts are social things, social thoughts, and of course, the shared expectations that influence individual actions. Third definition has been given by Max Weber, who defines sociology as the science which attempts the interpretative understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its course and effects. Max Weber की definition is very interesting. Actually, he has taken several concepts, several terms in order to understand sociology, in order to understand society in all its perspectives. Number one is social action. Social action, यहाँ पे ये understand करना ज़रूरी है कि this has always been performed, this can be performed between two or more individuals. एक individual अगर meditation कर रहा है isolation में, तो that cannot be called social action. It will be individual action. मैक्स वेबर ने कोर्स एंड इफेक्ट्स यानी कॉज एंड इफेक्ट की बात कही हुई है, और कॉज एंड इफेक्ट तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक कैजुअल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सोशल एक्शन. जहाँ पे कॉज होगा वहाँ पर ही इफेक्ट होगा, और इन अदर वर्ड्स इफेक्ट्स जो हैं वो जहाँ होते हैं वहाँ पे कॉज होता ही होता है. तो सोशल एक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई है मैक्स वेबर ने, कॉजल एक्सप्लेनेशन की, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी. नेक्स्ट डेफिनेशन जो है मैंने मैकलेबर एंड पेज की डेफिनेशन ली है, who defines sociology as a study of social relationships. Social relationships क्या होता है? This is actually any relationship between two or more individuals. हम सोसाइटी में रहकर सोशल बीइंग्स कहलाते हैं, ठीक है. सोसाइटी और इंडिविजुअल्स जो हैं both are complementary to each other. One cannot be divorced from the other. One cannot be isolated from the other. Both are connected to each other. So social relationship जो है, this is actually what social cohesion, social coordination, social cooperation is. Then next definition I've taken has been given by Maurice Ginsburg, who defines sociology in very broadest sense. He said, in the broadest sense, sociology is the study of human interactions and interrelations, their conditions and consequences. Now, two terms are very important in this very definition given by Maurice Ginsburg. Human interaction is somewhat mutual exchange of thoughts, views, and ideas. And what does interrelations mean? Interrelations जो होते हैं, these are the types and levels of communication. So, मॉरिस गिन्सबर्ग की डेफिनेशन के बाद मैं अब आपको बताऊंगी कि सोशियोलॉजी जो है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी क्या विशेषताएं हैं. In order to understand nature of sociology, you have to give derivative meaning of sociology first, then give definitions. After that, you just have to give characteristics of sociology. Nature of sociology में definitions और characteristics of sociology जो हैं वो देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी आपका nature of sociology जो है इसका full attemptation होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम विशेषताओं को कहते हैं. किसी चीज़ की क्या विशेषता है, क्या फीचर्स हैं, क्या गुण हैं.
इन द सेम मैनर सोशियोलॉजी के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट सोशल साइंस. सोशियोलॉजी जो है ये एक प्योर साइंस है. दिस इज इंडिपेंडेंट इन ऑल द सेंसेस. बाकी जो साइंसेस होती हैं उन्होंने सोशल साइंसेस से, सोशियोलॉजी से कंटेंट्स जो हैं वो बोरो किए हैं. बट सोशल साइंस जो है, सोशियोलॉजी जो है, it has its own code of study, it has its own line, it has its own branch, so that we can say that sociology is independent social science. Number 2 is a social science. Now sociology studies the behavior and actions of social activities of a man. This is a social science because it is a web of so many social relationships. Next is generalizing. Sociology is a generalizing science. There is no specification in the study of social system. There is no limitation. This is general in all the senses. This studies principles about human interaction and association. This is not a particular science. This is not specific science. This is generalizing science. Next characteristic is a categorical discipline. Here we have to understand that sociology जो है, it cannot study the concepts of good or bad, right or wrong. This is not normative science. It cannot study the moral or immoral rights. Okay? ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे we are gathered here to study the concepts of moral and immoral, who is good, who is bad, who is right, who is wrong. Actually ये सारे terms जो होते हैं ये एक discipline को normative sense provide करते हैं. बट सोशियोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज कैटेगोरिकल डिसिप्लिन. नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट साइंस. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स विच एग्जिस्ट ओनली एज एन आइडिया. एब्स्ट्रैक्ट में आपके सामने कोई चीज़ होती नहीं है. इट्स मेयर ख्याल, इट्स मेयर थिंकिंग, इट्स मेयर आइडिया. तो जितने भी सोशियोलॉजिस्ट ने अपनी डेफिनेशंस के थ्रू सोसाइटी के बारे में अंडरस्टैंड किया है, अपने व्यू पॉइंट्स जो हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं, उनकी बेस पर हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि सोसाइटी जो है ये क्या है. ये एब्स्ट्रैक्ट, एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट साइंस है सोशियोलॉजी जो कि कंक्रीट नहीं कहा जा सकता. बिकॉज कंक्रीट में एक सॉलिड चीज़ होती है हमारे सामने जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम परसीव कर सकते हैं. बट एब्स्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज sociology is both a rational and an empirical science. Now here we have to understand that rational means which is based upon reason, logic, and empirical means which is based on experimentation and of course practical experience. तो sociology जो है, this is not a rational or not, means आप कह सकते हो कि this is the combination of both the sciences. Okay, it's rational as well as empirical science. यहाँ पे हम रीज़न भी लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं और हम एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, हम कुछ ऐसे टूल्स जो हैं वो एम्प्लॉय करते हैं, यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द पैटर्न्स ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी. कई बार ट्राइबल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ ऐसे एम्पिरिकल साइंस या फिजिकल साइंस से रिलेटेड टूल्स लेने पड़ते हैं जो कि साइड बाय साइड रेशनल साइंस के साथ चलते हैं.
सो बोथ रैशनल एंड एम्पिरिकल साइंस जो हैं ये दोनों जो टर्म्स यूज़ की जा सकती हैं सोशियोलॉजी के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट nature of sociology, which includes derivative meaning, definitions, and characteristics. Thank you so much.